Hi, good evening, everyone. Okay, one second. Okay. So, जब से अपने CUET के results आए हैं, स्कोर कार्ड आए हैं, right? Many of the students are worried. First thing first, कि कौन सा college मिलेगा? Of course, that is the first priority, right? And post that, is there an option to shift from economics, right? मतलब कुछ students they are doubting themselves whether economics is for them or not, right? और वो चीज आती है उस पॉइंट से जब आपको लगे कि इज देयर अपॉर्चुनिटी इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर और नॉट, या दूसरी चीज होती है कि आपको एज अ सब्जेक्ट इट डजंट इंटरेस्ट यू. ठीक है. सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स टू दैट, राइट. टुडे विल डिस्कस कि व्हाट ऑल अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास once you complete your masters. Okay, and some of the options are there which you have post your bachelor's as well. ठीक है. आज के सेशन में we'll discuss about the options post masters. ठीक है. Let me tell you, even अगर आप bachelor's के बाद भी किसी भी प्रोफाइल में जाते हो, right? So at the end of the day आपको full growth नहीं मिलेगी. ठीक है. So we'll discuss that in detail, but for today we'll focus on only and on the options, opportunities post your masters. ठीक है. Now, different individuals, different students have different mindset. ठीक है. सबका अलग अलग एरिया में इंटरेस्ट होता है. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. कोई फिक्स रूल नहीं है कि मैं अगर प्राइवेट सेक्टर में जाऊंगा या जाऊंगी, सो दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर मी, क्योंकि 10 में से 9 लोग जा रहे हैं, तो दैट इज द बेस्ट रूल. ना ही कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि मैं पब्लिक सेक्टर में जाऊंगी या जाऊंगा, दैट इज द बेस्ट, बिकॉज वो सिक्योर्ड जॉब है. सो कॉल्ड व्हाट डू यू कॉल द गवर्नमेंट सेक्टर जॉब, दे आर सिक्योर्ड इन एवरीथिंग. ठीक है. ठीक है. ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए. ठीक है. इन बिटवीन यू हैव अदर ऑप्शंस एज वेल. ठीक है. सो कहने का मतलब ये है कि किसी भी रूट पे आप जाओ, किसी भी मोड में आप जाओ, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. ठीक है. आपको इस तरीके से नहीं जाना कि मेरा जो क्लासमेट है या मेरा जो सीनियर है उसने आईईएस कर लिया तो मैं भी जाके आईईएस के लिए बैठ जाऊं, या मेरा जो क्लासमेट है या मेरी जो फ्रेंड है, he or she is doing well at one of the big fours, let me just try for multiple interviews or referrals and I'll go there and my life is settled there. ठीक है. So let me tell you, there is no fixed concrete rule. सबका अपना अलग रूट है, सबकी अपनी अलग जर्नी है, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट कि आप एक पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए कितने इंटरेस्टेड हो. इज इट समथिंग विच हैज बीन योर ड्रीम सिंस चाइल्डहुड? ठीक है. नहीं, बचपन में नहीं बना, दैट्स ओके. इज इट समथिंग विच यू डेवलप्ड ग्रेजुअली, मे बी जब आप ग्रेजुएशन के टाइम पे इंटर्नशिप कर रहे थे, या you some of your senior alumni came to your campus, they told you about their organization and so on. So were you influenced at that point of time? So the decision to go into which direction depends on the fact कि which factor triggered you, which factor impacted you. और वो factor it can be from your home, घर के अंदर से वो impact आ सकता है. Maybe your brother is into the government sector, ठीक है, या your father is into government sector, or your father is in government sector but your brother or sister is into the corporate world. ठीक है. So these are different permutation and combination. Based on that, you tend to decide your journey, right? So opportunities, पहली बात, there are multiple opportunities. ठीक है. When we say multiple opportunity, we mean that opportunity is there in each and every sector. ठीक है. चाहे वो आप प्राइवेट सेक्टर ले लो, चाहे वो आप गवर्नमेंट सेक्टर ले लो. ठीक है. इवन ऑफ कोर्स अगर आपको बाहर जाना है उस केस में भी अपॉर्चुनिटी है. ठीक है. सो these were the few example कि in terms of opportunity there is no denying that कि there are multiple options. Now पॉइंट ये है, इफ यू लुक एट द फैक्ट, इवन अभी जब आप न्यूज में भी देखते हो कि द प्लेसमेंट्स फॉर एग्जांपल एट आईआईटीज आर ऑल टाइम लो. ठीक है.
not all-time low, but at least there has been a decline in terms of the placement ratio compared to other years. ठीक है, market में you can argue कि हाँ, if the IITs are not able to get their students placed, then what is the issue? क्या market में jobs हैं कि नहीं है, और अगर jobs हैं तो किस field में है, ठीक है, और अगर किसी field में है तो what are the skill sets required, ठीक है. Let me tell you, your education alone won't help you in getting a job, ठीक है. You need to have certain skill sets which you need to add. चाहे वो आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ, फॉर श्योर डिफरेंट टूल्स होंगे, आर स्टेटा पाइथन जो भी. ऑनेस्टली स्पीकिंग हर साल एक नया टूल आता है एंड यू हैव टू डेवलप योर सेल्फ विद दैट पर्टिकुलर टूल, ठीक है. इवन इन गवर्नमेंट सेक्टर वी थिंक कि अब वो टाइम, इट्स स्टिल द सेम ओल्ड थिंग कि यू आर कमिंग लेट टू द ऑफिस, देयर इज नथिंग टू वर्क, ठीक है, old standard tools are being used. नहीं, even the government sector has been revamped, ठीक है. अब वो आप चाहे किसी सरकार को क्रेडिट दे लो, ठीक है, with elections around, but overall even if you talk in your circle with your parents in particular, ठीक है, there has been a revamp in the government sector altogether, ठीक है, and it is visible as well. चाहे आप कुछ भी कह लो, overall there has been a revamp and something which everyone never expected कि हाँ चीजें इतनी टाइट होंगी, इतनी टफ होंगी. मे बी like you have, पहले क्या होता था, if you're coming to for a job, you are working in a government sector, so the timing when you reach office वो इतनी particular नहीं होती थी, but now you have punch in system, ठीक है, you have to be on time, you can't be late, ठीक है, and you have to work like, even in government sector it is no more 9 से 5 का job, it is 24/7 nowadays, ठीक है. So it differs from role to role and it differs from level to level as well, ठीक है. So कहने का मतलब ये है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, it doesn't matter, amount of effort, मेहनत करनी पड़ेगी, there is no shortcut to that, ठीक है. हाँ, सेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी आप बोल सकते हो that it is there in the government sector, no doubt about that, but along with that, if the other party who is pro private, they will say कि हाँ, private sector offers you much more options, ठीक है. So this was two extreme points of government and private sectors, ठीक है. So एक बारी I'll tell you the other options as well, ठीक है, and then simultaneously we will go through the all the tabs and we'll discuss about that, ठीक है. So सबसे पहले let's talk about government sector, ठीक है. आप UPSC एग्जाम्स के लिए बैठ सकते हो, ठीक है, सिविल्स एग्जाम के लिए, IES in particular as well, अगर आप इको बैकग्राउंड से हो, ठीक है. So this is just one जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, one internship opportunity in a government sector, ठीक है. So हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की, ठीक है. The best or the ideal role that a student coming from masters in economics can think, ठीक है, until unless I am driven by the perks, the remuneration from a private sector, then I'll favor the private one. Also, I'll always have one thing in mind कि हाँ, I'm doing masters in eco, तो IES तो एक ऐसा एग्जाम है that I need to give a shot. क्या हो गया, एक अटेम्प्ट ही तो देना है, ट्राई करने में क्या जा रहा है. There was that ad from Tata Sky, पूछने में क्या जाता है, right? Similarly, try करने में क्या जाता है. If you're doing masters, you have done your bachelor's, you have done your masters, what's the harm in giving it a shot for IES, ठीक है. So similarly, of course, for AS Economics optional as well, but I would rather say कि अगर आप masters complete कर चुके हो, so I would suggest ES is the ideal option that you can target, ठीक है. So that is one option, right? Now, of course, all these government sector employees, they are placed, they are given different ministries under which they work. Okay. For example, in Ministry of Corporate Affairs, right? So I have worked in Ministry of Corporate Affairs under RNA division. Okay. So I have worked with Deputy Director. I have worked with Director Sir as well. Okay. And so these are the profiles along with which you work. Side by side आपको काम करने का मौका मिलता है. That is why I told you
ये जो पहला जो फाइनेंशियल कमीशन का वी डिस्कस्ड अबाउट the opportunity. So that is one such example. Even before you officially enter the sector permanent basis पे, उससे पहले भी आप उसका एक व्यू ले सकते हो through internship opportunity, through young professional opportunity, through consultant opportunity. ठीक है? So हर मिनिस्ट्री just keep on checking कि हाँ कौन सा मिनिस्ट्री शायद अपॉर्चुनिटी ला रहा है, चाहे वो हो सकती है इंटर्नशिप, यंग प्रोफेशनल कंसल्टेंट, ये सारी डिफरेंट वैरायटीज में होती है। जाके वहां पे देखो, यू गेट टू वर्क विद सम ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द गवर्नमेंट सेक्टर वाला पोर्शन, राइट। अब it's not only IES as one of the options. Apart from that, you have Reserve Bank of India Grade B DEPR. ठीक है, now the point is कि काफी सारे स्टूडेंट्स को, और ये ऑनेस्ट आंसर है, काफी सारे स्टूडेंट, आई वुड से अगर मेरे को 10 में से बोलना हो तो 6 बच्चों को आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर के बारे में नहीं पता हो, राइट। दे वोंट बी अवेयर अबाउट इट, और अगर अवेयर होंगे तो दे वोंट गेट इनटू द फैक्ट कि हाँ ये क्या एग्जाम है, क्यों होता है, इससे कहाँ जॉब मिलती है, क्या एग्जैक्टली पूरा सीन है, तो वो नहीं पता होगा। ईदर ऑफ द टू केसेस होगा ही होगा। नाउ मेनी स्टूडेंट, मतलब ऑलमोस्ट ऑल, जो बच्चा मेरा ईएस के लिए बैठ रहा है वो डीपीआर के लिए भी बैठने की कोशिश करता ही करता है। ही और शी विल सिट फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम। ठीक है, बिकॉज you are getting entry into Reserve Bank of India. You are getting an opportunity to work at this institution, right? So no one would like to miss that opportunity. और अगर आपको मिल रहा है, then why don't you give a shot for that as well? कोई harm नहीं है उसमें. I'm not asking you to sit for AS Economics optional, because that is too tedious at times, until unless you have that vision. If you have that goal from day one, of course, I want my student to sit for that as well. But overall, अगर आपने masters complete कर ली, why I'm trying to say all these points is ये opportunity वाला all of a sudden फंडा आया कहाँ से, is because काफी बच्चे डिसअपॉइंट होंगे कि यार मेरा सीयूटी का स्कोर इतना अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलने वाला, मेरा मास्टर्स भी किसी ओकेश इंस्टीट्यूशन से होगा, मेरी प्लेसमेंट नहीं होगी, या कॉलेज या मेरा कॉलेज ठीक ठाक है, सो कॉल्ड प्लेसमेंट होगी 4-5 लाख वाली, व्हाट विल हैपन टू माय करियर? तो बॉस, द आंसर इज द करियर इज स्टिल इन योर हैंड, राइट। You have, I would suggest कि you start initiating your preparation, if not the first semester, by the second semester of first year, and of course the final year altogether. तो ये जो दो अपॉर्चुनिटी हैं, अभी तो खाली हमने गवर्नमेंट सेक्टर से ये दो छोटी सी अपॉर्चुनिटी उठाई हैं, बोलने के लिए छोटी हैं, बट इट कम्स विद लॉट ऑफ वैल्यू, लॉट ऑफ रिकॉग्निशन। ठीक है, सो वन इज योर ईएस, the other one is RBI grade B DPR. Both comes with immense reputation, right? And of course, honestly, ये तो शायद आप सबको भी पता होगा, with lot many perks. ठीक है, ये हो गया आपका completely into the गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, अब आप जाते हैं अदर साइड पे, एक्सट्रीम पोल पे, विच इज योर प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या जॉब्स मिलते हैं, कहाँ मिलेगा मुझे, कोई रैंडम कंपनी मिल जाएगी क्या? नहीं, रैंडम कंपनी नहीं मिलेगी। रैंडम कंपनी भी मिलेगी, स्टार्टअप भी मिलेंगे, पब्लिक कंपनी भी मिलेगी, ऑफ कोर्स प्राइवेट फर्म्स भी मिलेंगे, एंड सम ऑफ द बिगेस्ट एमएनसीज भी मिलेंगी। तो अगर मैंने, ये रहा आपका एकदम बहुत ही लेटेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, सो अगेन वी ऑलवेज ट्राई टू शेयर थिंग्स विद डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, कोशिश वो रहती है कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन भी शेयर, इट कम्स विद, इट इज ऑथेंटिकेटेड एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। ठीक है, कोई रैंडम फैक्ट नहीं बात करेंगे। सो ये आपके सामने है, इट इज डेलॉइट, राइट। आई वर्कड एट डेलॉइट एज वेल, राइट, बिग फोर, ऑल ऑफ यू नो, राइट। सो ओवर हियर अगर आप यहाँ पे देखो, इट्स एज रिसेंट एज 5th of April 2024। ठीक है, मैं बहुत डीप डाइव नहीं करूंगा इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में, बिकॉज my funda over here is to explain about the opportunity at one of the biggest MNCs, right? One of the biggest big fours. ठीक है, so ये रही opportunity, and the designation is also cool, sounds pretty cool, right?
मैनेजर्स के नीचे का असिस्टेंट मैनेजर एंड सो ऑन। ठीक है, ओवर हियर ये रहा आपका प्रैक्टिस डेलर प्रैक्टिस, ये उनके बारे में रोल है। अब आपने रोल पे आ जाओ और एलिजिबिलिटी पे आ जाओ सबसे पहले। ठीक है, नाउ आई गेस जितने लोगों को अभी गवर्नमेंट सेक्टर में वाले पॉइंट्स में या सेक्शन में इंटरेस्ट नहीं था, उससे ज्यादा इस सेक्शन में इंटरेस्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे बड़ी सी कंपनी आ रही है डिलॉयट कमिंग अप विथ असिस्टेंट मैनेजर जैसा टैग, एंड ये रही एलिजिबिलिटी, right? You can clearly see relevant qualification and or post qualification in economics, stats and econometrics. अब इसमें इन्होंने ऐसा क्या रॉकेट साइंस पूछ लिया आपसे that you haven't done? You are a master's graduate in economics, ठीक है, right? And you have already done econometrics in that, ठीक है, you've already done stats as well, ठीक है. They are not demanding regressive or in-depth knowledge about the other subjects. These are the alternate to economics. कुछ courses में हुआ coming from stats background, ये उनके लिए. I'm not saying that, but I'm saying that कि उन लोग का भी जो knowledge है, you possess those that knowledge as well. चाहे वो econometrics से हो, चाहे वो stats से हो, you do have that as well. So you guys will always have that plus point. You guys will always have an edge. You need to understand that आप लोगों के पास हमेशा एज रहेगा. मेक श्योर जस्ट योर बेसिक्स आर बेस इज सॉलिड, रॉक सॉलिड. ठीक है, मतलब कोई अगर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई चीज पूछ ले तो दे कांट बी एनीवन एल्स अपार्ट फ्रॉम यू आंसरिंग दैट क्वेश्चन, चाहे वो मार्केट सिनेरियो हो या कुछ भी हो. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू, हाँ जो मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आज की डेट में इफ यू आर गोइंग इनटू द मार्केट फॉर अ जॉब, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, यू कांट गो विदाउट द स्किल सेट्स. ठीक है, एमएस एक्सेल जैसी चीज तो इट्स एज बेसिक एज कैलकुलस, मतलब हर फील्ड में एक्सेल तो आपको चाहिए चाहिए, पीपीटी तो आपको चाहिए चाहिए, राइट? अब जो आज के टाइम के टूल्स हैं, ठीक है, और आई गेस मोटा मोटा एक आध साल और रहेंगे, उसके बाद अनदर सेट ऑफ टूल्स विल कीप ऑन कमिंग इन, जो कि है आर, जो कि है पाइथन, जो कि है स्टेटा. ठीक है, ये जो तीन चार टूल्स हैं दे आर देयर, और ये एक्सपेक्ट करते हैं दैट यू शुड हैव हैंड्स ऑन दीज टूल्स, राइट? और ऑनेस्टली बोलूं, कोई बहुत ज्यादा टफ टूल्स नहीं है. एटलीस्ट आपका ऑफ कोर्स एक्सेल तो लेट्स इग्नोर इट, दैट्स एज सिंपल एज पॉसिबल. You need to work, might work, have to work on Python wala part that requires a little bit more. ठीक है, so tools are very important. ठीक है, एलिजिबिलिटी वाइज आपके पास ये सब चीजें हैं, राइट? नाउ अगर यहाँ पे आप रोल्स के बारे में देखो, ठीक है, फाइनेंशियल एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कंप्यूटेबल जनरल इक्विलिब्रियम मॉडलिंग. सो मॉडलिंग हुआ, ठीक है, इकोनोमेट्रिक्स इज देयर, ऑफ कोर्स सीबीए, cost benefit analysis, and that the last point, the financial analysis. So I told many students जब आप लोग गोखले का फॉर्म भर रहे हो कि there are multiple options, MA करें, MSc करें, या there's one post graduate in finance, ठीक है, and even in MA MSc further you have financial economics, agri and actuarial and so on, जो भी अलग अलग domains है. So I told you कि you need to go with the domain which is of your interest first of all. ठीक है, because आपका जो career होगा that will be driven by that. अगर आपकी expertise finance में है then you need to go for that particular domain, right? Because फिर अब जब आप 2 साल पढ़ोगे, so the entire course, the electives, the main subjects, they will be around finance, right? So that will give you edge, correct? And I see ki Gokhale has a good amount of companies coming in from the finance sector. So I am not trying to tell you कि finance कर लो तो आपकी guaranteed job हो जाएगी, ऐसा नहीं है. Always go with the feeling कि हाँ मेरा interest किस में है, and of course that course structure, what exactly it comes with. ठीक है, so we talked about the government sector, we talked about the private sector.
काफी अच्छे का ये एक ऑप्शन है, अगर आप ढूंढने जाओगे मल्टीपल ऑप्शन। और यहाँ पे देखो बेस्ट पार्ट क्या है, व्हाट्स द बेस्ट पार्ट? द बेस्ट पार्ट इज दे आर नॉट सेइंग कि आप डीएससी से हो, दे आर नॉट सेइंग आप आईआईटी से हो, दे आर नॉट सेइंग आप आईएसआई से हो, दे आर नॉट सेइंग आप अंबेडकर से हो, दे आर नॉट सेइंग आप यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से हो या यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से हो। ठीक है, सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। द पॉइंट इज दे डोंट differentiate based on the university you are coming from, as long as your concepts are clear, you're rock solid with your concepts and basics, and अगर आपके पास ये जो tools हैं इनमें if you have expertise, you are better than a DSC student who doesn't possess these skill sets. ठीक है, you need to just simply match him or her. ठीक है, even थोड़ा 19-20 चलेगा, but if you have an edge for these, you have a grip with these tools, they might just prefer you as well. ठीक है, so the tag of the university, of course अभी आपको लग रहा होगा मेरा score and all कहाँ होगा, but what I want all of you is to feel positive and motivated and make sure आप जहाँ से भी करोगे you do it with full honesty and efficiency. और हाँ प्लीज ये सबके लिए है, चाहे आप डीएससी के हो, आईआईटीज के हो, कहीं से भी कर रहे हो मास्टर्स, आपके ऑफ कोर्स आपके इलेक्टिव्स में ये अगर ऑप्शंस हैं, और अगर नहीं भी है तो प्लीज अपने इंस्टीट्यूशन को बोलो कि प्लीज हमारे लिए कुछ सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखो, चाहे वो डीटीयू हो, एचसीयू हो, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। उन लोगों ने काफी जो लेटेस्ट करिकुलम है उन लोगों ने रखे हुए हैं, बट आई वांट अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ रहे हो और अगर आपको इनमें से कोई भी टूल्स नहीं मिलते हैं, सो फ्रॉम डे वन मेक श्योर यू मेक अ रिक्वेस्ट टू देम कि the department we want so and so tools which are industry friendly and oriented. ठीक है, सो दिस इज मस्ट। सो दिस वाज वन सच एग्जांपल। ठीक है, गवर्नमेंट भी हो गया, प्राइवेट भी हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं कि मेरा मन है मुझे अब्रॉड से रिसर्च करनी है। ठीक है, मुझे अब्रॉड जाना है, आई वांट टू डू पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, राइट? पीएचडी पीएचडी, ठीक है, एक तो वो टैग हो गया, दूसरा अब्रॉड अब्रॉड अब्रॉड, वो दूसरा टैग हो गया। एंड ऑफ कोर्स अगर आप उसमें ऐड कर दो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या कोई भी यूएस का मेजर यूनिवर्सिटी जो आपको करा रहा हो, सो इन दैट केस यू यू आर टू इंक्लाइन टुवर्ड्स डूइंग पीएचडी। ठीक है, बट इज दैट द पर्पस ऑफ योर करियर पाथ? ठीक है, इज दैट द पर्पस कि आपको पीएचडी करनी है? एंड आई एम टू डू रिसर्च वर्क इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्योंकि पीएचडी इज नॉट अ केक वॉक। इंडिया में तो छोड़ो, बाहर तो इससे भी ज्यादा टफ है। ठीक है, एंड स्पेशली व्हेन यू टारगेटिंग इंस्टीट्यूशंस लाइक लंदन स्कूल, आई एम नॉट सेइंग ओनली लंदन स्कूल बट कोई भी, आप चाहे यूएस, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जो अभी रिसेंटली स्टूडेंट्स आर गोइंग देयर, और इवन कनाडा, कहीं से भी आप अब्रॉड से करो, PhD means a lot over there, पहली बार। ठीक है, and it's equally tough as well because the research work what they demand, uh, it's very into the subject। तो वो चीज सिर्फ वही बच्चे कर सकते हैं और वही उन्हीं बच्चों को करना चाहिए who really feel कि हाँ I want to deep dive into economics। I feel I want to learn more about economics. I want to apply economics in the real life scenarios। ठीक है, तो उसी केस में आप जाते हो। और doing PhD in abroad gives you even more perks, okay, of course, along with the remuneration that you get throughout the tenure, वो तो है ही, that is more as compared to India. That is also one of the reasons, and of course, the profile of going out, doing PhD from abroad, जो मैंने आपको सबसे पहले बोला. So I know, and I know many students who want to go out, do research work, but honestly telling you, उन 10 बच्चों में से 9 बच्चे ऐसे हैं who genuinely want to make difference in economics। ठीक है, they really want to do something either in the field which might help economics in general, ठीक है, or something they want to come back to India and apply over here। ठीक है, तो that अगर आपका उस सेंस में इंटरेस्ट है, then of course PhD is one that you can pursue।
right? And after that, along with that, you have the next option, which is of teaching. ठीक है, नेट दे लेते हैं and let's get a permanent job, and for example in Delhi University या कहीं पे भी, for example. So this is just random option. So I thought of sharing. ठीक है, so it is related to the faculty position in economics, right? So the point is कि teaching is another option that you can pursue, right? You have options in many central universities and of course private universities, but again that has to be seen कि हाँ आपको कितना interest है in terms of teaching. So that is one other domain. ठीक है. So overall, where I found majority of the student is between the government sector and the private sector. ठीक है. Both the sectors offer you perks, recognition in different zone altogether, and it remains to be seen how you value each one of them. Okay. Then you have your PhD option and teaching option that you may want to pursue, and you can pursue accordingly. But both these options are subject to your core interest in the subject. ठीक है, अगर आपको interest है economics में, and that too to deep dive into that particular subject, then only you go for PhD level thing, or you go into teaching, because then you want to teach multiple students under you. Okay. So overall, I tried to kind of share multiple options, opportunities for you. ठीक है, जो है ये ऊपर से, मतलब पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट, रिसर्च, पीएचडी, ऊपर से ऑप्शंस हैं. और ऑफ कोर्स जब आप एक्चुअल में जाते हो, द रोल्स आर डिफरेंट. ठीक है, व्हेन आई से रोल्स, इट मींस नथिंग बट द टैग, राइट? कि फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो, आई विल गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल. इफ यू आर गोइंग इनटू फाइनेंस कंपनी, ठीक है, लेट्स से जेपी मॉर्गन, ठीक है, वहां पे शायद आपका जो प्रोफाइल होगा दैट विल बी रिस्क एनालिस्ट, ठीक है, और फ्रॉड एनालिस्ट. ठीक है, सो दैट माइट बी द प्रोफाइल नेम जो आपको मिले. ठीक है, whereas if you go into, let's say, any big four, और आप जा रहे हो मास्टर्स के बाद, so they might give you a TP role, transfer pricing role over there, right? So that is one section. So roles will vary from organization to organization, but overall, you will always have a private, a government, or public, whatever you want to call it, and then research work option, and of course the teaching option. Okay, and in between, you can decide accordingly for these, right? So thank you so much, guys, for joining in. Right, I will again reiterate the whatever the score is, you need to work out, right? You need to see which is the best college you get, university you get, and make sure you make the most out of those 2 years, and that you beat some of the brightest students going forward. When I say beat, you beat them by getting and securing the jobs at some of the top institutions and with the top packages. Okay. That's it for today, guys, and we'll meet in the next session. Okay. A question is, so I'll just answer that, and then I'll just wrap up. Yeah, DSC and JNU should start because कल से DU का portal will start, so you can expect maybe by next week the cutoff should start coming. ठीक है, चलो guys, thank you so much. Take care.